welcome to our YouTube series in which we are solving prelims PYQs from 1979 to 2024. Here it is 45 years plus of question papers and it is arranged theme-wise and subject-wise. The same question will appear on the PYQ portal and the class notes will be provided for that. आपको बता दूं कि PSP 2025 is still going on. You can check out its feature. So let's start. Today's topic is Government of India Acts. Now this is the part 2 of the video. For earlier part, you can check out the modern history playlist. First question is the most short-lived of all the Britain's constitutional experiments in India was 1999 का क्वेश्चन है. अगर आप देखेंगे इस पे तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट एक्ट कौन सा है. तो 1861 के बाद 1892 आ रहा है तो इट इज अराउंड 31 years एग्जिस्टिंग. देन 1892 के बाद 1909 आ रहा है तो इट इज अराउंड 17 years. 1909 के बाद ही 1919 आ गया था. इट वाज अराउंड 10 years. देन 1919 के बाद was 1935 तो अराउंड 16-17 years. 16 years. अगर मैं देखूं 1909 का ही सबसे शॉर्टेस्ट है 10 years. तो आंसर इज सी. यूपीएससी ने बहुत उम्दा तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन को घुसाने की कोशिश की है. यू कैन सी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हैड 31 years, 1892 17 years, 1919 जो है 16 years and 1909 जो है 10 years. Moving to the next question. Which of the following is not a feature of Government of India Act of 1935? कौन सा इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है? अगर आपने पहले के वीडियोस देख रखे हैं एक्ट्स के, इट वुड बी वेरी इजी टू सॉल्व. आइए देखते हैं. A bicameral legislature था, provincial autonomy is also there, all India federation was also there, but it was not envisaged in reality. तो directly at the center at the provinces ये नहीं था. The answer is A. Moving to next question, you can see the solution here. Government of India Act 1935, provincial autonomy replaced diarchy, and the Government of India Act 1919 provided for diarchy at the center as in provinces. ये हमारे PSP के कुछ components हैं. You can see here. You can take the screenshot here. It has in multiple tests like practice test, revision test, sectional test, full length test, UPSC mixed test, along with current affairs, CSAT support and mentorship. And here are USPs और PSP, है ना. जिसमें 45% जो बच्चे थे उन्होंने prelims qualify किया, 50% were directed, and it helped them with confidence and accuracy. आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग है. बेसिकली 2002 का क्वेश्चन है. बहुत क्वेश्चन इजी है. द ट्रिक इज यू हैव टू पिक दैट स्टेटमेंट और दैट पॉइंट which you are comfortable at and then try to eliminate. अगर मैं देखूं चार्टर एक्ट 1813 इट इज फेमस फॉर एंडिंग द ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC और ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड बट देयर वाज कंडीशन लाइक एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. बट एंड तो हो गया था राइट. तो ए को मैं 2 बोल सकता हूँ. तो अगर ए को मैं 2 बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो आई वॉज लेफ्ट एट ए एंड सी. दोनों में A2 है विच इज करेक्ट. नाउ अपने आप D1 हो जाता है. यू कैन सी हियर. So D is one, matlab Fits India Act is setting up board of control in Britain to fully regulate the East India. Yes, board of control was for political affairs or you can say revenue, civil and military affairs. So D is one. The fight is between B, which is 3 and 4, or C. Regulating Act देखते हैं. Either 3 होगा या तो 4 होगा. देखते हैं इसमें. The power to govern was transferred from East India Company to British Crown. Last, the company's directors were asked to present to the British government all correspondence and documents pertaining to the administration of the company. अगर मैं देखूं यहाँ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो कंपनीज डायरेक्टर्स. रेगुलेटिंग एक्ट टॉक्ड अबाउट दिस. तो बी इज बेसिकली 4. आंसर इज दिस. एंड एक्ट ऑफ 1858 which gave the power to the crown to regulate or to govern East India Company because it was after revolt. The answer is A. Moving to next question. Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over the Executive Council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? It was Indian Council Act 1861 which introduced the portfolio system और आप प्रेजेंट में उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट या मिनिस्टर सिस्टम. It was not this, not this, not this, it was this. After the revolt, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था. उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था. The Indian Council Act of 1861 transformed the Viceroy's Executive Council into a miniature cabinet. आप कैबिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसका ये evolution form है. Run on the portfolio system and each of the 5 ordinary members were placed in charge of district government of Calcutta's government. Moving to next question, which is question number 5. The real intention of the British for including the princely states in the Federal Union proposed by Government of India Act 1935 was.
देखते हैं 1935 तक कांग्रेस का जो रोल था बहुत डोमिनेट हो चुका था एट द नेशनल लेवल. सो ब्रिटिश वेर ट्राइंग टू subvert its power, to check its power, and they found good opportunity by bringing up princely states. तो देखते हैं, to exercise more and more direct political and administrative function, no. Involve the princes actively in the administration of colony, no. Finally, affect the complete political and administrative takeover of all the princely states, no. Because policy of annexation पहले से ही उन्होंने छोड़ रखा था, उसी कारण रिवोल्ट हो चुका था. To use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders. Yes, this was the time to weaken the Congress. The answer is D. Moving to next question. A CSAT courses is also launched, taken up by Devinder sir. Here it's featured. आप QR code scan कर सकते हैं, देख सकते हैं. Question number 6. Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? The trading activities were to be abolished. तो ये तो था. The designation of supreme authority was to change as Governor General of India in Council. Yes, William Bentinck was there. All lawmaking powers to be conferred on Governor General in Council. ये भी था. And Indian was to be appointed as a law member in the Governor General's Council. Now, this was not the case. Indian नहीं, एक law member जरूर था, but not an Indian. The answer here is D. Moving to next question. Question number 7. With reference to colonial rule in India, what was sought by Ilbert Bill in 1883? ये Lord Ripon के time आया था Ilbert Bill to bring Indians and Europeans at par as far as the criminal jurisdiction of courts was concerned. Now, this is the correct answer. To impose severe restrictions on the freedom of native press as it was perceived to be hostile to colonial rule. No, this was Vernacular Press Act. It came during the time of Lord Lytton. To encourage the native Indians to appear for civil services examinations by conducting them in India. No. To allow the native Indians to possess arms by amending the Arms Act. No. Answer is A. कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए. तो देर आर सम फेमस गवर्नर जनरल, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड लॉर्ड एरविन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब बार बार देख सकते हैं, कुछ ही एक्ट्स हैं, उसको बार बार रिपीटेडली पूछा गया. द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस. सेकंड, द पावर ऑफ governors to veto legislative action and to legislate on their own. थर्ड, एबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. अब ये कभी नहीं हुआ था. द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. ये तो नहीं है. थर्ड मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ. तो अपने आप आई गॉट फर्स्ट स्टेटमेंट एज करेक्ट. थर्ड, द पावर ऑफ गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड लेजिस्लेट ऑन देयर ओन. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर इज 1 and 2 B. The provincial autonomy replaced hierarchy. The governor could refuse assent to the bill, promulgate ordinances, and enact governors' acts. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. द मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ. Montague Chelmsford report formed the basis of Government of India Act 1919. Answer is B. Moving to next question. Which of the following pairs is not correctly matched? Pitt's India Act, Warren Hastings, yes. Doctrine of Lapse, Dalhousie. Ilbert Bill, Ripon हमने देखा. This Vernacular Press Act was not during Curzon but was during Lytton. हमने अभी देखा था. The answer is C. Moving to next question. Who among the following repealed the Vernacular Press Act? अब आया कब था? लॉर्ड लिटन. रिपील कौन करेगा? उसके बाद वाला. इट वॉज लॉर्ड रिपन who repealed the Vernacular Press Act. So answer here is B. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पैटर्न में पूछ रहा है. 2005. Second, a Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773. अगर आपने एक्ट पढ़ रखा है तो this statement is correct. तो अपने आप I got left with three statements. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. अगर आपको आईपीसी का ध्यान है, करंट अफेयर्स में भी सुना होगा, आईपीसी 1860, आईपीसी 1860, उसी की बात करें. 2 और 3 तो सही है. तो अपने आप आई एम लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस. So I'm just left with this. So it was not Warren Hastings, but it was Lord Curzon who basically established a regular police force in India on the British pattern. The British pattern. तो अगर मैं देखूं, फर्स्ट गलत है, अपने आप आंसर इज बी. Lord Curzon was the first Governor General who established a regular police force on the British pattern. Moving to the next question, which is question number 13. And in which of the following provinces was a Congress ministry not formed under the Act of 1835? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आप एनसीईआरटी थीम्स 3 पढ़ेंगे तब भी आंसर करना इजी है आपको, लेकिन फैक्ट याद होना चाहिए. यू नो, उड़ीसा में, मद्रास में, बंगाल में और बिहार में देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय कांग्रेस
either in full majority or in coalition, but it was Punjab जहां उन्होंने नहीं बनाया था. The answer is D. Congress ministries were formed in Bombay, Madras, Central Provinces, Odisha, United Provinces, NWFP, मतलब North West Frontier Province, Assam, Bihar, but not in Punjab. Next question. Consider the following statements. The Government of India Act 1935 provided for. बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है. All India Federation at Center, yes. Establishment of Federal Court, yes. The Provincial Autonomy, yes. तो आंसर अगर हम देखें तीनों सही है. आंसर इज डी. The provincial autonomy which replaced hierarchy, All India Federation was to comprise all British Indian provinces, all Chief Commissioners provinces and Indian states. अगर आप पीवाईक्यूज पर कर लेते हैं आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूपीएससी का. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2006 का क्वेश्चन है. द चार्टर एक्ट 1853 abolished East India Company monopoly of Indian trade. अब आपको ध्यान होगा हमने किया है इट वाज 1813 which abolished, not 1853. तो पहला गलत है. तो अपने आप statement we can eliminate. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. Yes, this is correct. It was B. Answer is B. The Charter Act 1813 abolished East India Company monopoly of Indian trade. With this, we complete the part 2 of the video and stay tuned for other parts. Thank you.